डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, ध्यान देंगे। ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट। स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। स्टडी ऑफ लाइट को क्या बोला जाता है? ऑप्टिक्स। सो लाइट when travel in straight path we can say that it is ray of light। क्या बोलते हैं उसको? ray of light। so light जो है वो किस तरह से ट्रेवल करती है, डिफरेंट सर्फेसेस से किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होती है, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सो स्टडी ऑफ लाइट इज नोन एज ऑप्टिक्स। So firstly we discuss about reflection of light कि reflection of light क्या है? Reflection of light। Reflection of light। So when light travels, when light ray or ray of light, when light ray travels in a medium and after striking the surface of the medium, after striking the surface of the medium, it reflects back to the same medium, phenomena is known as phenomena is known as reflection। Phenomena is known as reflection। So जब भी कोई लाइट रे ट्रेवल करती है किसी पर्टिकुलर मीडियम में, आफ्टर स्ट्राइक द सरफेस ऑफ द मीडियम, उस सरफेस पे स्ट्राइक करने के बाद इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम, देन दैट फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। उसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। So let us consider, मान लीजिए ये कोई सरफेस है सेपरेटिंग अ मीडियम। लेट दिस रे ऑफ लाइट स्ट्राइक द सरफेस और let this be normal at this point of incidence, and after striking it comes back to the same medium। मान लीजिए कोई लाइट रे है, लाइट रे इस मीडियम में ट्रेवल कर रही है और सरफेस ऑफ द मीडियम, ये जो सरफेस है इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये वापस उसी मीडियम में चलेगी, सपोज ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लेट इट बी ग्लास। सो आफ्टर स्ट्राइकिंग दिस सरफेस इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम। इस तरह से आई और इधर रिफ्लेक्ट होके वापस इसी मीडियम में चलेगी। लेट दिस बी एयर। सो एयर में वापस चलेगी। सो यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पे इस लाइट ने, यहाँ पे इंसिडेंट रे ने इस पॉइंट पे स्ट्राइक किया था। सो दिस इज इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे। ओ एन मान लीजिए ये है नॉर्मल। ये जो एंगल थीटा है, ये जो एंगल है, लेट इट बी आई, और यहां पे एंगल दिस इज आर। सो एंगल आई
एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस आर इज angle of reflection. This R is angle of reflection. This I is angle of incidence, angle of incidence. So ये angle of ये incident ray, reflected ray, angle of incidence I से डिनोट करेंगे, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को स्मॉल r से डिनोट करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. सो डियर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट लॉज हैं, 2 इंपॉर्टेंट लॉज हैं. कौन कौन से लॉज हैं ध्यान देंगे. और स्टूडेंट्स काइंडली नोट करते चलेंगे साथ साथ में. 2 important laws of reflection. 2 important laws of reflection. Laws of reflection. Laws of reflection. So ध्यान देंगे. First law of reflection. It states that the incident ray, it states that the incident ray, comma, it states that the incident ray, reflected ray and the normal all lie in same plane. So incident ray, reflected ray and the normal all lies in the same plane. So this is first law of reflection. Second is the incident ray, reflected ray, the angle of incidence. फर्स्ट लॉ में हमने क्या बात की? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एंड सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस. It states that the angle of incidence is always equal to angle of reflection. Angle of incidence is always equal to angle of reflection. So ये जो angle of incidence है, जिस angle से ये जो incident ray है वो strike कर रही है surface पे, that is known as angle of incidence. और angle of reflection जिस angle से strike करने के बाद जो light ray है वो reflect back हो रही है same medium में, that is known as angle of reflection. So according to this law, angle of incidence, angle I, is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. So this is reflection of light. Next is spherical mirrors. Spherical mirrors.
सो स्फेरिकल मिरर्स मेन टू टाइप्स के हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. स्फेरिकल mirrors. Spherical mirror. The mirror whose surface is whose inner or outer surface the mirror whose inner or outer surface is silvered of which it forms a part of hollow sphere is known as spherical mirror. Is known as spherical mirror. तो spherical mirror क्या है? The mirror whose inner और outer surface, ऐसा mirror का वो part जिसका inner या outer surface क्या हो, silvered हो. किसका part है? एक hollow sphere का. That is known as spherical mirror. It is of two types. Spherical मिरर टू टाइप्स हैं इसकी. कौन कौन सी टाइप्स हैं? कनकेव मिरर एंड सेकंड वन इज कन्वेक्स मिरर. सो कनकेव मिरर एंड सेकंड इज कन्वेक्स मिरर. टू टाइप्स के मिरर हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर. सो कनकेव मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे. पहले किस तरह के मिरर को कनकेव मिरर बोला जाता है, ध्यान देंगे. कनकेव मिरर the mirror whose reflecting surface is towards the center of the sphere. The mirror whose reflecting surface, कौन सा surface है? Reflecting. ऐसा mirror जिसका reflecting surface कहाँ हो? Towards the center of the sphere, of which it forms a part of hollow sphere, or it forms a part is called concave mirror. So उसको क्या बोलेंगे? कनकेव मिरर बोला जाएगा, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो मान लीजिए ये क्या था? ये एक हॉलो स्फीयर था, सारा हॉलो स्फीयर. इस हॉलो स्फीयर का ये क्या है? सेंटर.
इसका हमने होलोस्फीयर का ये पार्ट ले लिया, दिस पार्ट, ये क्या है, स्फेरिकल मिरर। क्या बन गया अब ये, स्फेरिकल मिरर। सो सिल्वर्ड पोर्शन इसका आउटसाइड है, सिल्वर्ड, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, whose reflecting, the mirror whose reflecting surface is towards the center, ये सेंटर है इसका, तो जो भी लाइट रेस की स्ट्राइक होगी इस तरह से, इस वे से वो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। इस इनर सरफेस से लाइट रेज क्या होंगी, रिफ्लेक्ट होंगी। सो मिरर whose reflecting surface is towards center of the sphere, इस सेंटर की तरफ है, इसका स्फीयर की सेंटर में है, सो इट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर, नेक्स्ट इज कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, ध्यान देंगे, कन्वेक्स मिरर, convex mirror, convex mirror, the mirror whose reflecting surface, the mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere, center of the sphere of which it forms a part, of which it forms a part, is known as convex mirror। क्या बोलेंगे उसको, convex mirror। So the mirror whose reflecting surface is away from the center of the sphere of which it forms a part is known as convex mirror। उस मिरर को क्या बोला जाएगा, convex mirror। So convex mirror का जो सिल्वर्ड पोर्शन है वो इनसाइड द सेंटर एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज अवे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो आउटसाइड रहेगा, मीन्स जो लाइट रे आएगी वो इस वे से स्ट्राइक होके इस तरह से वापस चली जाएगी। whose reflecting surface is away from the center of the sphere। so silvered portion इसका इस तरफ रहेगा, silvered, this is convex mirror, convex mirror। so this is about convex mirror। next is some important terms related with the mirror, some important terms related with the spherical mirror, some important terms related with spherical mirror, related with spherical मिरर। सो देखेंगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो किसके साथ रिलेटेड हैं, स्फेरिकल मिरर के साथ रिलेटेड है। सो स्फेरिकल मिरर, लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ कनकेव मिरर। सो दिस इज द पोल P डिनोटेड बाय P। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पोल। दिस इज F फोकस, कैपिटल F से डिनोट करेंगे। C
C, center of curvature. Center of curvature. Distance between pole and focus, small f. स्मॉल f से डिनोट करेंगे इसको. R, distance between pole and center of curvature, capital R. This is known as radius of curvature. Radius of curvature. So important terms हैं, नोट करेंगे इनको. Pole, the center of the center of the part of the sphere, is known as pole, and denoted by P. So this is pole. This point is pole. Next is focus. The point where light ray that comes parallel to the principal axis, the point where light rays that comes parallel to the principal axis after striking the mirror, it passes through a particular point, known as focus. क्या बोलते हैं उसको? फोकस बोला जाता है. सो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस ध्यान देंगे. प्रिंसिपल एक्सिस is the इससे पहले डिस्कस होते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. The center of hollow sphere, the center of hollow spherical sphere, is known as center of curvature, So ये जो पार्ट है एक हॉलो स्फेरिकल का पार्ट है, इस तरह से स्फीयर का. सो इस होल हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल एक्सिस. देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस क्या है. प्रिंसिपल एक्सिस the line joining the
the line joining the pole and ये जो लाइन है किसको ज्वाइन कर रही है? पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर is known as प्रिंसिपल एक्सिस. क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा. ये जो एक्सिस है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस. सो फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, एंड नेक्स्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान देंगे क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर denoted by R, capital R, and this R is equal to the distance between center of curvature and pole, the distance between center of curvature and pole of the mirror. Pole of the mirror is called क्या बोलेंगे उसको? Radius of curvature. Is called radius of curvature. The distance between center of curvature and pole of the mirror is called radius of curvature. That is known as radius of curvature. Next is focal length. Focal length. So small f से इसको डिनोट करेंगे. कैपिटल F फोकस है, स्मॉल f focal length. The distance between pole and focus. The distance between pole and focus of the pole and focus of the mirror is called focal length. क्या बोलेंगे उसको? focal length बोला जाएगा. So note down please. So these are some important terms related with spherical mirror. सो टू टाइप्स के मिरर के बारे में हमने अभी डिस्कस की, कनकेव मिरर एंड स्फेरिकल मिरर. सो इन मिरर्स में किस तरह से इमेज फॉर्मेशंस होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. बिफोर दैट सम इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस आर देयर. सम इम्पॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस. New Cartesian sign conventions. New Cartesian sign conventions. So कौन कौन सी हैं sign conventions? Sign conventions.
number one is all the distances are measured from pole of the mirror. All the distances are measured from pole of the mirror. अभी हमने देखा था कि जो कन्वेक्स मिरर है उसके कनकेव मिरर है, इसके केस में जो पोल है यहाँ पे और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड है, तो लाइट रे जो भी आएगी इस तरफ से आएगी, ये इसका पोल है। सो कोई भी डिस्टेंस अगर हमने मेजर करना है तो कहाँ से कहाँ करेंगे, पोल ऑफ द मिरर। सो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज डिनोटेड बाय यू, तो डिस्टेंस बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट एंड पोल डिनोटेड बाय u and it is known as object distance. So अगर हमने इस object distance को मेजर करना है तो कहाँ से कहाँ करेंगे, not from here to here but it is from pole to in the direction of object, from pole to this direction. इधर से इधर मेजर नहीं करेंगे, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन मेजर करेंगे। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। सेकंड इज द डिस्टेंसेस which are ऐसे डिस्टेंस जो क्या है, द डिस्टेंसेस which are in the direction of incident ray. The distances which are in the direction of incident ray taken as positive, while distances opposite to the direction of incident ray taken as negative. So dear students, ध्यान देंगे, the distances which are in the direction of incident ray, ऐसे distances जो incident ray की direction में होंगे, taken as positive, उनको क्या लिया जाएगा, positive लिया जाएगा, but the distances which are opposite to the direction of incident ray taken as negative. So अगर हम यहाँ पे कनकेव मिरर के केस में देखें, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर हमने इसका डिस्टेंस मेजर करना है तो हम फर्स्ट पॉइंट को पहले ध्यान में रखेंगे कि ऑल द डिस्टेंसेस ऑफ मेजर फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सभी जो डिस्टेंस है वो कहाँ से कहाँ मेजर करेंगे, पोल से इस तरफ को मेजर करेंगे। सो पोल से अगर इधर को मेजर कर रहे हैं तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन किस तरफ है, यहाँ से यहाँ, इंसिडेंट की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ है, देखो। सो इंसिडेंट रे की अगर डायरेक्शन इस तरफ है, इट मीन्स वी आर ट्रांसवर्सिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो द डिस्टेंस इज negative, means u is taken as, u will be taken as minus u को हम क्या लेंगे फिर, minus u. So अगर let us suppose कि कोई इमेज सपोज यहाँ पे कोई बन रही है इस तरह से, let it be virtual image. So अगर हमने इस इमेज का डिस्टेंस मेजर करना है तो इस इमेज का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ होगा, पोल से इस तरफ को मेजर होगा। लेट दिस बी a डैश b डैश इमेज, और इमेज डिस्टेंस को हम v से मेजर करते हैं। सो v जो है ये, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ, किस डायरेक्शन में है, इमेज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो इट विल बी टेकन एज पॉजिटिव. So next, third
important point is, third important point, of sign convention. The height above the principal axis. The height above the principal axis taken as the height above the principal axis taken as positive, while height below the principal axis, height below the principal axis taken as नेगेटिव। क्या लेंगे उसको? नेगेटिव लिया जाएगा। जो भी हाइट क्या होगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होगी। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। द हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेंगे उसको? पॉजिटिव। तो दिस हाइट इज टेकन एज पॉजिटिव। वाइल अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कोई इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रही है इधर, लेट इट बी ए डैश बी डैश। सो दिस हाइट ऑफ दिस इमेज इट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो है, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव। उसको क्या लिया जाएगा? नेगेटिव लिया जाएगा। सो दिस इज अबाउट कार्टेशियन कन्वेंशंस। इंपॉर्टेंट साइन कन्वेंशंस हैं जिनको हम इमेज फॉर्मेशन में यूज करेंगे आगे। सो काइंडली नोट डाउन प्लीज। नेक्स्ट इज इमेजेस। इमेजेस जो हैं किस तरह की हैं? टू टाइप्स की मेन इमेजेस है। वन इज रियल इमेज एंड अनदर वन इज वर्चुअल इमेज। सो इसके बारे में फर्दर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। काइंडली नोट डाउन प्लीज।